Hello everyone and welcome to DNA Education. I am Himanshi and in this session we will begin our new chapter, that is our environment. Today's topic is ecosystem and food chains. As we know कि कोई भी हैबिटेट होती है जिसमें कई ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो उस हैबिटेट के कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कई सारे ऑर्गेनिजम्स साथ में एक साथ रहते हैं और कई सारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जिनसे वो फूड एंड न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होती है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होता है फॉर सम और द अदर थिंग दैट कैन बी फॉर फूड एंड मैनी मोर थिंग्स। इसी तरीके से वो लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स पर भी डिपेंडेंट हो सकते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर सॉइल पर या आइस पर या टेम्परेचर पर एंड मैनी मोर थिंग्स। दिस कंप्लीट सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन अ हैबिटेट ऑन ईच अदर as well as on their surrounding environment is called an ecosystem. So here we see that ecosystem is the interdependence of living and non-living things on each other living in a particular habitat. So when we have discussed about ecosystem, we have to discuss about the various components of ecosystem. There are two major components of an ecosystem, that is biotic components and abiotic components. Biotic components involve all the living organisms that can be found in an ecosystem. Living organisms include plants. Plants, as we know, are those living organisms on the earth which produces food primarily, and others can be consumers. These are the organisms which consume the food prepared by plants. And then there are decomposers. Now let us look at them one by one. For example, we know that plants prepare food. Plants have the ability to capture sunlight, and from that sunlight they prepare food. So that's why plants are called producers, क्योंकि plants ही earth पे food को generate कर सकते हैं by using sunlight. कोई और organisms या non-green organisms कहा जा सकता है, नॉन ग्रीन ऑर्गेनिजम्स ये प्रोड्यूसर का काम नहीं कर सकते। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, दैट कैन बी डायरेक्ट डिपेंडेंस और इनडायरेक्ट डिपेंडेंस। फॉर एग्जांपल, अगर हर्बीवोर्स हैं तो वो डायरेक्टली प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे। सो हर्बीवोर्स एज कंज्यूमर्स आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर फूड। हाउएवर, अगर कार्निवोर्स हैं सपोज, तो कार्निवोर्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स को ईट करते हैं, बट दे डू नॉट ईट plants, लेकिन they eat the animals that eat plants. For example, अगर grass is eaten by deer and deer is eaten by lion, तो अगर grass नहीं है तो deer भी नहीं होंगे, तो lion या tiger भी deer को नहीं खा पाएंगे because they won't be available. So in this way, whether they are herbivores or carnivores, they are all directly or indirectly dependent on plants for their food. Decomposers are small bacteria and fungi that can be found in the environment, in soil and almost everywhere. Usually जो भी waste material हमारा generate होता है in day to day life, वो waste material can be our used things or even dead plants and animals. ये सभी waste materials degrade करके, इनको decompose करके वापस nutrients में convert करके soil में ही mix कर दिया जाता है by the decomposers. So decomposers break down the dead organic matter and the waste materials into usable components and then release them into the environment ताकि वो वापस साइकिल में फ्लो कर सकें. सो decomposers although are microscopic organisms, लेकिन इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सपोज डीकम्पोजर्स हमारे इकोसिस्टम या हमारे एनवायरनमेंट में नहीं होते, तो ऐसे में जो वेस्ट है वो एक्यूमुलेट होता रहेगा एंड द होल लॉट ऑफ वेस्ट विल गेट एक्यूमुलेटेड ओवर द अर्थ, एंड ओवर ईयर्स अर्थ पर इतना वेस्ट जनरेट हो जाएगा कि शायद हमें दूसरी चीज़ें नज़र ही ना आए एंड देयर ऑल विल बी वेस्ट. सो डीकम्पोजर्स फॉर्म अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम. Now coming to the abiotic components, these are the non-living components found in the ecosystem. These can be land, water, soil, sunlight and many more substances. As we know that all these components are non-living, but they have a significant impact on the biotic components because plants take water, soil, land, nutrients, sunlight, they all use these components. Not only plants, most of the organisms that are living in the environment, they all utilize these abiotic components. Apart from this, there can be inorganic and climatic factors also which are counted
काउंटेड इन एबायोटिक कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, रेनफॉल है या ह्यूमिडिटी है, ये सारी चीज़ें भी ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करती हैं एंड दे आर ऑल्सो काउंटेड इन एबायोटिक कंपोनेंट्स। इनऑर्गेनिक में वी काउंट अबाउट वेरियस न्यूट्रिएंट्स जैसे फॉस्फेट, सल्फेट्स एटसेट्रा जो सॉइल में, एनवायरनमेंट में मिलते हैं। फॉर डिटेल्स ऑफ दीज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स यू कैन रेफर टू आवर बुक ऑफ डीएनए एजुकेशन की पॉइंट साइंस क्लास 10th। वहाँ डिटेल डिस्क्रिप्शंस है ऑफ बायोटिक and abiotic components. Now from this we have to move on to a new concept, that is food chain. As we know that food chain is a series of eating and being eaten. Ecosystem में एक organism किसी दूसरे organism को खाता है and further is eaten by another organism. So the series of eating and being eaten is called a फूड चेन। लेकिन यूजुअली प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म कंज्यूम नहीं करता, बहुत अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स उन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो सीरीज एक सिंगल चेन ना होकर ब्रांच्ड होती है। इसी ब्रांच्ड चेन नेटवर्क को या फिर इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स को हम फूड वेब कहते हैं। फूड वेब इज अ मोर प्रैक्टिकल मॉडल ऑफ इकोसिस्टम एज कंपेयर टू food chain. For an example, grass eaten by deer, eaten by lion. This is a straight chain. It is an example of a food chain. Another example of a food chain in an aquatic ecosystem. Aquatic means water ecosystem. Phytoplanktons eaten by zooplanktons, eaten by small fish, eaten by large fish, further eaten by whales. Phytoplanktons are unicellular plants that are found in water bodies. They float on water bodies, and similarly zooplanktons are unicellular animals that float on water bodies. So phytoplanktons being plant in nature, they can capture sunlight and produce their food, so they can form a food chain. So phytoplanktons are eaten by zooplanktons which are further eaten. So this again forms a food chain. And now look at this construction. This represents a food web. Here observe that grass is eaten by grasshopper and grasshopper is eaten by scorpion. However, grass is also eaten by squirrel. Both squirrel and scorpion can be eaten by kit fox. Squirrel can again be eaten by eagle. So here you see that one organism is being eaten by more than one organism. Such type of interrelationship is called a food web. Now food web and food chain, they work on specific principles. There are certain laws. For example, the first is the 1% energy law of sunlight. It is said कि सनलाइट से जो भी एनर्जी अर्थ पर पड़ती है उसका सिर्फ 1% ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। अब उस 1% एनर्जी जो प्लांट्स ने एब्जॉर्ब करी वो उसको फूड प्रिपेयर करने में यूज़ करते हैं, अपने लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एटसेट्रा, उस सब में यूटिलाइज करके अपनी बॉडी के लिए कंज्यूम करके सिर्फ 10% एनर्जी उनमें स्टोर्ड होती है और ये 10% एनर्जी एज फूड नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल यानी कि नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो उसमें ईट करता है उसके पास पहुंचती है। ट्रॉफिक लेवल इज एक्चुअली लेवल्स इन अ फूड चेन। जैसे ये हमने फूड चेन के बारे में डिस्कस किया, सो दीज इंडिविजुअल लेवल्स दीज इंडिकेट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। नाउ 10% एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। अगेन वो ऑर्गेनिजम्स उस 10% एनर्जी का 90% कंज्यूम करेंगे और 10% आगे फर्दर पास ऑन करेंगे। इन दिस वे हम देखते हैं कि एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल पे डिक्रीज करती जाएगी और इसी वजह से वी हैव लिमिटेड ट्रॉफिक लेवल्स, यानी कि एक फूड चेन हमने देखा यहाँ आके ख़त्म हो जाती है या यहाँ ख़त्म हो जाती है, इट कैन नॉट गो टू इन्फिनिटी क्योंकि जो एनर्जी है वो बाय दीज रूल्स बहुत कम होती जाती है ईच ट्रॉफिक लेवल पे और इसीलिए हायर ट्रॉफिक लेवल्स पे हमारे पास कम एनर्जी होती है जिसकी वजह से लिमिटेड ट्रॉफिक लेवल्स ही अवेलेबल होते हैं। अनदर इज दैट मोर ऑर्गेनिजम्स आर अवेलेबल ऑन लोअर ट्रॉफिक लेवल्स देन ऑन द हायर ट्रॉफिक लेवल्स। एक्चुअली लोअर ट्रॉफिक लेवल्स पर डायरेक्टली सनलाइट पड़ती है एंड दे कैन कंज्यूम वेरी मच एनर्जी और हर ट्रॉफिक लेवल पे क्योंकि एनर्जी कम होती जाती है तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी कम होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक पिरामिड है विच इंडिकेट्स डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, जैसे कि प्रोड्यूसर्स जिसमें ग्रीन प्लांट्स आएंगे, दे विल पास ऑन द एनर्जी टू प्राइमरी कंज्यूमर्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड हर्बिवोर्स।
This will pass on the energy to secondary consumers, which are also called carnivores. Secondary carnivores then will pass on energy to tertiary carnivores, which are called top carnivores. Usually up to 4 or maximum 5 trophic levels can be seen in ecosystem. Now let us consider an example where suppose 10,000 joule of sunlight is falling on earth. So if 10,000 joule of energy is falling on earth, then producers will capture 1% of 10,000, which is 100 joule. So in this food chain, actually only 100 joule of energy is entering. Now plants will consume 90% of this energy and will pass on 10% energy to the next trophic level, which becomes 10 joule. Then further only 10% energy will be passed on to secondary consumers, which is 1 joule, and there it will go to 0.1 joules. So you can see that there is a drastic decrease in the amount of energy that is being transferred to upper trophic levels. और इसी वजह से ये पिरामिड ऑफ एनर्जी इस शेप में है, विच शोज कि यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है एंड एट ईच ट्रॉफिक लेवल एनर्जी इज कीपिंग डिक्रीजिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट फूड चेन्स एंड फूड वेब्स. फॉर मोर डिटेल्स you can refer to our DNA book and can also log into our website of www.dnaeducation.com. That's all. Thank you.